Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, as we have been talking about number of activities to make your classes engaging, enriching and exciting. Being a science graduate and dealing with the students of different classes, I want to share with all of you what all activities I have conducted in my classes and what all activities I developed while my classes they were going on, while dealing with the students with various learning styles, looking at their needs and all. I developed some of the strategies as well. That all I have compiled in two separate books. One is Creative Connections, uh, for classes third to fifth, another is Artful Science. So that is for 6 to 8. So I have covered from third to 8 standard this science subject. So my lovely educators, being a postgraduate in English literature and language and in IT, I would be soon sharing with you a number of activities for English language for making your IT classes also engaging, enriching, and exciting. I am really glad that God has given me an opportunity to complete my master's in education. And there I got to know, different other things like how you can make your classroom management effective, how you can have such kinds of activities strategies in your class so that your students they look forward to your classes, like learning beyond the books. It's not like that I always focused only on books, but I went beyond that. Maybe during my childhood, maybe right now also when I'm studying and exploring, I always try to connect the things with the daily life. So this is how, I have learned, I have explored, I have uh, implemented the same in my life, in my teaching, in my professional life. This is what I want from all of you, also, my lovely educators. Let's join our hands to make this SDG 4 quality education a successful one. So, my lovely educators, today we're going to talk about another topic for 6 to 8, that is properties of materials. When we talk about properties of materials, from metals to plastics, discover the world of materials and their endless possibilities. If we look around, there are a number of materials. घर में देखें, बाहर देखें, सड़क पर देखें, दुकान पे देखें, स्कूल में देखें, क्लासरूम में देखें, प्लेग्राउंड में देखें, everywhere there are different materials. तो materials कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में हमने बच्चों को अपने सिखाना है. उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज करेंगे? जस्ट हैव अ क्विक इंट्रो. फर्स्ट ऑफ ऑल, materials are all around us. From the metal in our cars to plastic in our phone, each material has its unique properties and uses. And the possibilities are indeed endless when it comes to creating new products and technologies. By understanding the properties and applications of different materials, we can make informed choices about the products we use and create. Let's embrace the world of materials and their endless possibilities for innovation and sustainability. Remember, every material has its unique strengths and challenges. And by understanding them, we can unlock their full potential. So, we need to create awareness about the materials available in our surroundings. उनकी क्या हमारे हमें ज़रूरत है. कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे सब्सटेंसेस हैं. हमें देखना है कि हमें किसको यूज करना है. इको फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज करना है. जहां पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेट अस थिंक, let us come up with some innovative and creative solutions, right? So ये हमें अपने बच्चों में inculcate करनी है ऐसी habits. If I talk about sensory experiments, we can use sensory experiments to explore the properties of materials. For example, you can have your students to touch, smell, observe, like sand है, clay है, dough है, like उनकी properties क्या हैं, touch करने पर वो कैसा feel होता है, उसका texture कैसा है, smooth है, rough है, right, granules हैं उसमें, मतलब कैसा उनको feel हो रहा है. तो आप उनको सेंसरी एक्टिविटीज करवा सकते हैं. उसके अलावा मिस्ट्री ऑब्जेक्ट चैलेंज करा सकते हैं, जिनमें कि यू कैन हैव योर स्टूडेंट्स टू गेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन. लाइक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो उन्होंने पहले नहीं यूज किया है, बट ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज किस ऑब्जेक्ट के साथ रिजेंबल होती हैं, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है. यू कैन प्रोवाइड क्लूज टू हेल्प देम गेस द प्रॉपर्टीज सच एज वेट, टेक्सचर और मे बी कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो मटेरियल टेस्टिंग भी कर सकते हैं. use material testing activities to investigate the properties of different materials. Just for example, you can have your students test the strength of different material. पेपर है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, इसकी स्ट्रेंथ को वो टेस्ट करेंगे. तो उसके लिए डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कैन बी डन. आउटडोर
एक्टिविटीज कैन बी डन, जहां पर कुछ मटेरियल देखें, उनकी स्ट्रेंथ देखें, उनको पानी में डालने पर कैसा उसके ऊपर इफेक्ट आता है, उसके ऊपर अगर ऑयल डालते हैं तो क्या इफेक्ट होता है. आई मीन दे विल बी एबल टू सी द चेंजेस, रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स टू different organic or inorganic solvents or solutions. I mean, this is how they'll be able to check, test, and come up with their own observations and inferences. Material design challenge. Challenge your students to design and create an object using specific materials with different properties. नए मटेरियल क्या बच्चे बना सकते हैं? अगर हम उनको बोलें कि 2-3 मटेरियल को मिक्स करके एक नई चीज बनाइए, जैसे यू कैन गिव देम एग्जांपल ऑफ स्टील, राइट. सो जैसे अलॉयज हैं तो ठीक है वो नहीं बनाते, बट आई मीन टू से कि वो क्या बना सकते हैं, लाइक क्या चीजें उनके साथ अवेलेबल है, क्या मटेरियल आसपास सराउंडिंग्स में उपलब्ध हैं, उनको यूज करके. फॉर एग्जांपल, you can have your students design a bridge using different types of materials and test their strength and durability. बच्चे आपके 3D मॉडल्स बनाते हैं, वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं, उनमें वो डिफरेंट मटेरियल यूज करके देखें कि इसमें अगर और मटेरियल यूज करेंगे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है. आई मीन एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली उन सब कॉन्सेप्ट्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ मटेरियल सॉर्टिंग. हैव योर स्टूडेंट्स सॉर्ट द सेट ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. For example, you can have your students sort materials based on the color, texture, hardness, sorting and grouping, जैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था. सी सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. फूड की बात करी हमने, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग की बात करी, अब हम डिफरेंट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्लास्टिक है, मेटल है, बियॉन्ड कोई भी चीज इसमें जो आ रही है, चाहे वो एलॉयज हैं, तो उन सब की बात करेंगे, उनको सॉर्ट करेंगे इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. यू कैन हैव योर स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक मटेरियल टू लर्न अबाउट its properties. For example, you can have your students investigate the properties of the wood by examining different types of wood and conducting experiment to test their strength and durability. wood तो है, पर आगे wood भी अलग अलग तरीके की है, तो उस अलग अलग wood का क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी है, क्या उससे बनाया जा सकता है, कौन सी फर्नीचर में यूज कर सकते हैं, कौन सी वार्डरोब में यूज कर सकते हैं, किससे टेबल बनाए जा सकते हैं, किससे डोर्स बनाए जा सकते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंगली दे कैन इवन प्लान अबाउट दैट आल्सो. नाउ मटेरियल मैचिंग गेम. क्रिएट अ मटेरियल मैचिंग गेम वेयर योर स्टूडेंट्स हैव टू मैच द मटेरियल विद द प्रॉपर्टीज. मटेरियल मैचिंग के लिए अगेन यू कैन हैव सम कार्ड गेम्स आल्सो इन योर क्लास, मे बी ई गेम्स ऑन पैडलेट मैचिंग. कनेक्टर्स बन जाते हैं ना पैडलेट में, connector एक से दूसरी तक connector, and then you can label the connector. I'll show you in the upcoming video where I'll demonstrate कि आप Padlet को किस तरीके से effectively आप क्लास में यूज कर सकते हैं. माइंड मैपिंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकते हैं, रिलेशंस दिखा सकते हैं, राइट. सो मेक श्योर यू यूज द सेम इन योर क्लास. Now, material research project की बात करें तो you can assign some research projects where your students investigate specific material, create a presentation about the properties, uses, environmental impact. क्या है, प्लास्टिक्स यूज करते हैं, प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पर क्या असर हो रहा है, राइट. तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, कौन से इको फ्रेंडली मटेरियल को हम यूज करें, इसको उससे सब्स्टिट्यूट करें. एंड देन मटेरियल स्कैवेंजर हंट कर सकते हैं. क्रिएट अ मटेरियल scavenger hunt where your students have to find and identify different materials with specific properties. For example, you can have your students search for material with certain texture or color. Hunting game कराइए, उनको बोलिए कि आपको सारे यहाँ पर एक ग्रुप जितने प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं सारे वो ढूंढ रहा है, अनदर वन सारे मेटल के ढूंढ रहा है, राइट. मेटल में भी आप डिवाइड कर दीजिए, आयरन है, स्टील है, या आई मीन कॉपर है, जो जो आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड करें कि आप अपने सराउंडिंग्स में कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ऑब्जेक्ट जो हैं फाइंड कर सकते हैं. तो जो ज्यादा करेगा देन दैट विल बी द विनर. ज्यादा करने के लिए ये है कि आप देखेंगे कौन से ज्यादा अवेलेबल है, कौन जल्दी करके लाता है, कौन मैक्सिमम जगह स्पेस कवर करता है. अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट योर ओन rubrics. Now मटेरियल का कोलाज बना सकते हैं. Ask your students to come up with a beautiful collage with the unique properties of different materials. Encourage them to use their creativity to design a collage highlighting the different properties of each material. Right? वो कोलाज जब बनाएंगे सिर्फ मतलब इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल कोई इमेज भी बना सकते हैं. आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, उससे रिलेटेड सपोज एग्जांपल दे रही हूँ मैं एक, मतलब यू कैन गो बियॉन्ड दैट. अगर आपका सपोज गणेश चतुर्थी है, उसके ऊपर गणेश जी का आइडल बनाना है, यूजुअली हम क्या है क्ले लेके बना रहे हैं, ठीक है. तो आप उनको डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज करने के लिए बोल सकते हैं कि उससे बना रहे हैं, या आप कोई और चीज बना रहे हैं, राइट. तो कोई भी रिसेंट जो हमारी एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ऐसी आप जो है वो प्लान कर सकते हैं. Now it's the right time. In the world around us, so rich and diverse, materials of all kinds, nature does differs.
Now, from rocks to minerals to plants and trees, there are so many things for us to see. Let's start with rocks. So solid and strong, formed by pressure, heat, and they can last so long. Granite, basalt, sandstone too, each with their own properties, own unique hue. You can ask your students to find such materials. इनसे कौन कौन से monuments बने हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट? रेड फोर्ट की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात कर रहे हैं, कॉटन, वूल, मेपल, ओक, पाइन, tall, so grand, providing materials that we use by hand. So such kinds of activities can be done. उनसे पूछिए, एक्सप्लोर करिए कि इनसे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बने हैं, कहाँ इसको यूज किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, क्यों इसको यूज किया गया. Rocks, minerals, plants all provide material we can see. So such kinds of activities can be conducted. Stay tuned to Mentoring the Mentors. My lovely educators, like, subscribe, share, and do shower your love and blessings in the form of comments, likes, and subscriptions and membership. Thank you. Have a nice day.